जो ऑनलाइन फेशियल फेशियल ऑन कर दीजिए। Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the Microsoft Excel. Some portion of the Microsoft Excel we have completed in the previous classes. हमें पूर्व क्लास रे Microsoft Excel रो किछि टॉपिक को कवर करी थिले. तो बाय द वे आज आमे आउ किछि रेस टॉपिक Microsoft Excel रो मध्ये अछि जहा को आज कवर करिबा. तो मु पूर्व क्लास रे तुमको कहितली जे Microsoft Excel जहा कि गोटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर Microsoft कंपनी द्वारा डेवलपमेंट हेछि. एंड Microsoft Excel रे हमें जेतले स्टार्ट करूजे ऑलरेडी हमें केवल सिंपली ग्रिड लाइन्स गुड़ा बा गार गुड़ा केवल पाचे जोड़ा को से जो ग्रिड लाइन्स थी द्वारा अनेक गुड़ा रो एवं कलम तैयारी हुए. तो से अनुसार देखले 10,48,577 रो एवं 16,384 कलम आम गोटे वर्कशीट रे अवेलेबल हुए. एंड आमे विभिन्न प्रकार जिनस जंती कहथिले डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पाइवट टेबल, सिनेरियो, गोल सीक डाटा ये सब जिनस गुड़ाक एक्सेल मुख्य पार्ट बोली मु तुमको प्रीवियस क्लास रे कहितली. तो आज रेस पार्ट आउ किछि अछि. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे हम प्रोसीडिंग करिवा वर्तमान. तो क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन. You can quickly change the appearance of your work by choosing auto format from the dash tab. The options are option A home, option B view, option C format, option D tools. You can give the response by simply chart on the screen. तमे तम रेस्पॉन्स को देई परिबो स्क्रीन रे सिंपली टेक्स्ट मैसेज को टाइपिंग करी. Anyone can give the answer. What is the right answer? You can quickly change the appearance of your work by choosing auto format from dash tab. Anyone can give the response? को टैब को चूज करी आमे ऑटो फॉर्मेट को अप्लाई करी परिबा. Anyone can give the response? No one. By pressing home tab. Home tab रे हमर गोटे ऑप्शन अछि. तो राइट आंसर इज होम टैब. हम हाइलाइटिंग भी कर दोछि तुमको. तो सिंपली होम टैब को हमको जिबा को पड़िबो. एंड होम टैब को गला परे हमें कोन करिबा ना ता धरे गोटे ऑप्शन पाइबा. हमें जो ऑप्शन टा होछि हमर व्हाट सिंपली होम टैब को में जिबा. होम टैब रे अछि हमर ए ऑप्शन टी जोटी कि हमें फॉर्मेट रे हमें एटा को एक्टिव कर देई परिबा. Okay, next question for you. To protect a worksheet, you can choose protection and the protect sheet from which menu. आमे जदी गोटे वर्कशीट को प्रोटेक्शन करिबा को चाहूचे बा गोटे वर्कशीट को प्रोटेक्ट करिबा माने प्रोटेक्ट माने कोन गोटे वर्कशीट को जने देखि परिबो, जने विजुअलाइज करि परिबो. बाय द वे डाटा गुडा को भी रीड करि परिबो, डाटा गुडा को यूज भी करि परिबो. बट दैट पर्सन कैन नॉट एडिट एनीथिंग इन द वर्कशीट. माने एडिटिंग माने जेमति कि रो ऐड करि परिबो नाही, रो डिलीट करि परिबो नाही, कॉलम ऐड करि परिबो नाही, कॉलम डिलीट करि परिबो नाही, कोनोसी डाटा को ऐड करि परिबो नाही, कोनोसी डाटा भी डिलीट करि परिबो नाही, कोनोसी डाटा को चेंज बा फॉर्मेटिंग भी करि परिबो नाही. तो सिंपली सेही जो प्रोटेक्शन जदी हमें करिबा को चाहूथिबा गोटे वर्कशीट पाई हमको को टैब को आ भितरु जिबा को पड़िबो. ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी रिव्यू एंड ऑप्शन डी डाटा. You can give the response simply by chatting on the screen. तमे response देई परिबो chatting करिकी. To protect your worksheet, you can use protection and protect sheet from the dash menu. Anyone can give the response? The right answer is review. तो review tab को सेति पे हमकु जिबा को पड़िबो. And the review tab रे protect sheet, protect book सब किछि सेठी अछि. हमें सेठी जाई by the giving the password we can protect your worksheet. As a result, you cannot delete, you cannot edit, you cannot add anything inside the worksheet. हमें वर्कशीट रे किछि ऐड करि परिबो नाही, वर्कशीट रो किछि डिलीट करि परिबो नाही, बा वर्कशीट रे कोनोसी फॉर्मेटिंग बा डिजाइनिंग करि परिबो नाही.
Next question for you. You can open the highlight changes dialog box by choosing track changes from the dash menu. Anyone can give the response? You can open the highlight changes dialog box by choosing track changes from which menu? track changes माने सिंपली कथा जेमते हमें मोबाइल ट्रैकिंग करू मो मोबाइल मिसिंग हे जाउची तो बाय द वे मो मोबाइल ता कोठी अछि मो जानि पारुची ट्रैकिंग ऑन करथिले सेमती जेतेबेले कॉमनली मो वर्कशीटा गोटे ऑफिशियली यूज होउथबो तो मो तो सेठी पर्सनली पासवर्ड देके रखी परिबिनी ना तो सेतेबेले मो वर्कशीट रे कोन चेंजिंग होउची सेटा मो जो अप्लाई करबी सेटा बाय द वे फॉर ट्रैक चेंजेस ताले से जो ट्रैक चेंजेस ता मते को जगह एग्जैक्टली मिलिबो you can open the highlight changes dialog box by choosing track changes from the dash menu add hele jemti eita re highlighting होथिबो कि जदि किछि डिलीट करियो चेष्टा करछि एमती होथिबो कि जदि किछि मॉडिफिकेशन करिया कोछि सेटा केमती हाइलाइटिंग हेथिबो तो एटा को जगह को जाई हमें एक्टिव करि परिबा एनीवन कैन गिव द रिस्पांस the options are option A edit, option B insert, option C format and option D review. This answer is also review tab. ताले एतिकी हमें एबे गोटे माने कंक्लूड रे पहुंचुचे रिव्यू टैब इज फॉर द प्रोटेक्शन माने डॉक्यूमेंट रो हमें कोन करिचे डॉक्यूमेंट रे कोन चेंज करबा को चाहूचे आउ गोटे थरो व्यू करबा रिव्यू व्यू कर हमें तो करिथिले देखिजे निश्चित भाबे कोन कोन करिचे बट रिव्यू को जाई कि डॉक्यूमेंट रो प्रोटेक्शन करबा डॉक्यूमेंट को आउ थरो ट्रैक चेंजेस वाली जिंसो को अप्लाई करबा तो ए सब जिंसो डाको विशेष करी हम रिव्यू टैब रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्कशीट डिजाइन क्राइटेरियन एमानको भितरु कोटा गोटे वर्कशीट डिजाइन रो क्राइटेरियन नुह क्राइटेरियन मींस क्राइटेरिया मींस कंडीशन तो एमानको भितरु कोटा गोटे वर्कशीट रो डिजाइनिंग करिवार क्राइटेरिया नुह एनीवन कैन गिव द रिस्पांस ऑप्शन ए एफिशिएंसी ऑप्शन बी ऑडिबिलिटी ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी क्लैरिटी दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमानको भितरु कोटा गोटे वर्कशीट रो डिजाइन करिवार क्राइटेरिया नुह ऑप्शन ए एफिशिएंसी ऑप्शन बी ऑडिबिलिटी ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट ऑप्शन इज क्लैरिटी द राइट आंसर इज डिस्क्रिप्शन बोली किछि गोटे ऑप्शन सेमती क्राइटेरिया न थाए हमें चाहिए एफिशिएंसी वे को हाइलाइटिंग करि परिबा ऑडिबिलिटी वे करि परिबा क्लैरिटी भी क्लियर भी कर देई परिबा डाटा गुडा को ए क्राइटेरिया अनुसार ए डाटा रहिबो नाही तो बाय द वे डिस्क्रिप्शन बोली किछि गोटे सेमती क्राइटेरिया रे नाही बा कंडीशन किछि गोटे एक्सेल रे यूज नाही नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द ऑप्शन ए एंड की ऑप्शन बी शिफ्ट की ऑप्शन सी एस्केप की ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ सेल गोटे सेल रो कंटेंट्स अछि बाय द वे हमो ताकू कॉपी करिबा को पड़िबो एंड कॉपी करिबा को हेले ताको हमें ड्रैग करिबा सेट सिलेक्शन करके ड्रैग करिबा एंड ड्रॉप करिबा ताले गोटे जगह टाणी नै आ गोटे जगह रे पकीबा ताले हमको को की विशेष करी एमानको भितरु यूज करिबा को पड़िबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर एनीवन कैन गिव द रिस्पांस ड्रैग करके ड्रॉप करिबा ताले एमानको भितरु कोठा होचे राइट आंसर एनीवन कैन गिव द रिस्पांस द राइट आंसर इज नॉन ऑफ दिच एमानको भितरु कोनोसी की भी यूज करा जाय नहीं आमे तो सिंपली सिलेक्शन कले ड्रैग करिबा एंड ड्रॉप करिबा एठू टाणी केनिबा एंड सिटी छाडी दबा तो सेति पे कोनोसी की रो कोन आवश्यक अछि किछि भी दरकार नहीं सिंपली माउस पॉइंटर रे सिलेक्शन कले एठू टाणी माउस बटन को प्रेस कले टाणी के आनिले एंड आ गुड जगह रे पखली देले सो नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ यू प्रेस डैश द सेल accepts your typing as its contents एमानको भितरु कोटा तुमको प्रेस करिबा को पड़िबो जहा कि तमे गोटे सेल रे देथिबा कंटेंट्स ता एक्सेप्ट होबो बा जोटा तमे टाइपिंग कलो से कंटेंट ता एक्सेप्ट करिबो बा सेल रे सेटा रहि जिवो ऑप्शन ए एंटर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर ऑप्शन सी टैब एंड ऑप्शन डी
insert एमानक भितरु को कीटा हमको प्रेस करबा को पड़िबो सिंपली जहां हमें सेल रे कंटेंट्स रे टाइपिंग करिचे जदी सेटा सेल कंटेंट्स रे रहिबा को चाहूतिबो एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स if you press dash the cell accept your typing as its contents एमानक भितरु कोटा हमको प्रेस करबा को पड़िबो जदी गोटे सेल हम कंटेंट्स रे एक्सेप्ट हबा को चाहूची you have give the response as option A yes option A is the right answer enter की को ही प्रेस करिया पड़िबो सिंपली enter की को जदी प्रेस करिबा ताहले हमें सेल रे जहा टाइपिंग करिथिबा सेटा हम थारु सेल एक्सेप्ट कर नेबो ओके by the way next question for you the autofill feature autofill हमें एक्सेल रे जानि छे बेसिकली तीनटा फीचर यूज करा जाय गोटे ऑटोफिल गोटे फिल सीरीज आ गोटे होची ऑटो कंप्लीट तो बाय द वे ऑटोफिल फीचर को काहे की यूज करा जाय बा तार कोन extends a sequential series of data automatically adds a range of cell values applies a border around selected cells and D none of these एमानक भितरु को फीचरटा ऑटोफिल फीचर पाई एप्लीकेबल एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी ऑटोफिल फीचर पाई एमानक भितरु कोटा होची लागू एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स Option B, that is wrong. Option A is the right answer. The option A is the right answer because autofill মই इट तुमको बुझे दोछि autofill रो काम कोन धरि नियो तमे संडे लिखिछो एंड संडे टा परे मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे ए भली आसीबो ताले हमको को करिबा को पड़िबो ऑटोमेटिकली तो केबे भी ऐड होबो नाही हमको बाय द वे ताको एक्सटेंड करिबा को पड़िबो माने बढ़ीबा को पड़िबो ताले बढ़ीबा पले ताकि तुला हमें टाणी देउछे से जो सीक्वेंशियल सीरीज डाटा बढ़ी जीवो माने हमर जदी जनवरी अछि तापर फेब्रुअरी तापर मार्च तापर अप्रैल ए टाइप रा ऐड हिजबो सो ऑटोफिल फीचर कैन एक्सटेंड्स ए सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डाटा सीक्वेंस माने धारावाहिक भाबे जनवरी लेक्चर माने तापर ऑब्वियसली फेब्रुअरी आसीबो मार्च लेक्चर माने तापर अप्रैल आसीबो मंडे लेक्चर माने तापर ट्यूसडे आसीबो सो दैट इज द फीचर ऑफ ऑटोफिल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट to be for creating a chart from the selected cells बहुत इंपोर्टेंट जिंस बहुत इजी जिंस बहुत यूजफुल जिंस भी व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट से कीबोर्ड शॉर्टकट ता कोन जोटा को हमें अप्लाई करिबा गोटे चार्ट को हमें गोटे सेल रे अप्लाई करिया पे बा गोटे निर्दिष्ट जगह रे एक्सेल रो गोटे चार्ट को आनिबा पाई मो कहितली विभिन्न प्रकार चार्ट गुडा अछि बार चार्ट लाइन चार्ट रैडर चार्ट बबल चार्ट कॉलम चार्ट पाई चार्ट तो जहां भी हो गोटे चार्ट को हमको अप्लाई करबा को अछि बाय द वे माउस मोर काम करू नाही मते कीबोर्ड रे काम करबा को पड़िबो तो एमान को भितरु मते को की को प्रेस करबा को पड़िबो ऑप्शन ए F3 ऑप्शन बी F5 ऑप्शन सी F7 ऑप्शन डी F11 व्हिच की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए चार्ट इन द सिलेक्टेड सेल्स एमान को भितरु को कीटा यूज करा जाय एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स The right answer is option D. So F11 जदि तमे F11 की को प्रेस करूछो ताहले हमर चार्ट ता बाय द वे शॉर्टकट की रे ऐड हे परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर you can use the formula palette to तमे formula palette को व्यवहार करि परिबो ऑप्शन ए फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स ऑप्शन बी create and edit formulas containing functions option C entered assumptions as data option D copy a range of cells तमे फार्मूला पैलेट को यूज करि परिबो फार्मूला पैलेट जोटा एक्सेल रा में मूल जिंस कहूची कोनसी कैलकुलेशन करिबा पाई फार्मूला होची माने कोन गोटे प्रोसीजर जो प्रोसीजर के हमें सेल वैल्यू गुडा का बा सेल रेफरेंस गुडा का नै परिबा डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर गुडा का नै की सेमान के भीतर रिलेशनशिप रखी गोटे कैलकुलेशन करिबा गोटे हिसाब करिबा ताहले एमान को भीतर कोटा आ पाई प्रयोज्य बा कोटा होची ठीक ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स जदी हमें फार्मूला पैलेट को यूज करिबा सो कोटा हमें यूज करिबा
The right answer is option B. Option B को ही हमें व्यवहार करिबा create and edit formulas containing functions. ताले हमें फॉर्मूला को क्रिएशन भी करि परिबा जदी कोनोसी फॉर्मूला लिखछि ताकू चेंज भी करि परिबा containing functions. हमें जानि छे फॉर्मूला बा फंक्शन हो नॉर्मली सब बेले गोटे इक्वल टू साइन रो आरंभ हुए गोटे समान चिन्ह रो आरंभ हुए हमें लिखिछे मन सम बाहर करियो चाहूचे a1 रो थिबा वैल्यू b7 पर्यंत ताले हमें कोन लिखुचे इक्वल टू a1 plus b1 plus c1 plus d1 plus e1 এই টাইপৰ লিখুছে বা আমি কোন করছে ইকুয়াল টু সম a12 বা a1 কলন e1 এমতি পকাই দউছে তাহলে সেই কথা কହୁଛି ফর্মুলা প্যালেট র বেসিক্যালি यूज টা হଉଛି क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूलाज कंटेनिंग फंक्शंस जो सेले भी फॉर्मूला टा कैलकुलेशन होथिबो फॉर्मूला पैलेट को जाई कि हमें सेटा को क्रिएशन करि पारुचे बा किछि एडिट करि पारुचे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू What pivot table toolbar button updates the data in a pivot table or pivot chart report if the source data changed? What pivot table toolbar button updates the data in a pivot table or pivot chart report if the source data changed? The pivot जो हमें टेबल कहूचे pivot टेबल टा जतरा ऐड करि दउचे ताले एमानक भितर को से टूल बार बटन टा कोन सेटा यूज करा जिवो जहा कि सेटा सोर्स डाटा को हमें किछि चेंज करिवा माने रो रो डाटा को कॉलम को कन्वर्ट करि परिबा कॉलम रो डाटा को रो को कन्वर्ट करि परिबा फाइंड आउट द डिफरेंट समरीज pivot table तो सही है ना pivot table is basically used to analyze large size of data you can view or change or analyze large size of data according to your requirement. You can use the pivot table reports when you want to do sorting, totaling or compare related items. तो इथि पे pivot table को हमें यूज करूचे तो pivot table पाई इमानक भितर को जिंसटा होची लागू बा pivot table नो को टूल टा इमानक पे लागू anyone can give the response option A format report option B pivot table option C refresh data and option D show details anyone can give the response Anyone can give the response? What is the answer of the question 91? तो सेथि पाई हमको यूज करिया पड़िबो रिफ्रेश डाटा तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर शो रिफ्रेश डाटा हमें रिफ्रेश डाटा को यूज करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज एन एक्सप्रेशन दैट टेल्स हाउ द नंबर्स in a determined set of cells are to be calculated. What is an expression that tells how the numbers in a determined set of cells are to be calculated? इमानक भितर कौन से एक्सप्रेशन टा जहा कि हमको कहिताए जे नंबर बा सेट ऑफ नंबर्स को हमें नै कि किछि कैलकुलेशन करिबा किछि हिसाब करिबा ऑप्शन ए फार्मूला ऑप्शन बी फील्ड option C data and option D query what is that option anyone can give the response the right answer is your formula तो formula होची कोन ना formula means you can use the cell reference or cell names to calculate a thing by using the cell references or cell names all formulas in Excel must be begin with an equal to sign. Without equal to sign, the entry is interpreted as regular data as text or numbers. जदि समान चिन्ह रु सेटा नुहे without equal to sign, ताहले सेटा से गोटे टेक्स्ट बा नंबर बा एमती गोटे किछि जनरल लिखा हिच बोली से धरिनी. सो से जो एक्सप्रेशन दा को एक्चुअली हमें कोन कहितौ से एक्सप्रेशन दा को जहा कि नंबर को आ डिटरमाइन करिथाय गोटे कैलकुलेशन को सेटा को एग्जैक्टली फार्मूला बोली कहिथाय. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Next question for you, quarter 1, quarter 2, quarter 3 is an example of what? Option A, formula, option B, function, option C, series and option D, syntax. Quarter 1, quarter 2, एगुडा को गोटे कहार एग्जांपल फॉर्मूला रो ना फंक्शन रो ना सीरीज रो ना सिंटैक्स रो एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स The right answer is series. देखो हमें जब कोनोसी एग्जाम भी दबा को जिबा
हमको बहुत लिमिटेड समय भीतर बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व करबा को पड़िबो जेमति कि हमको विद इन 1 आवर हमको पाखा पाखी 100 क्वेश्चन सॉल्व करबा को पड़िबो तो जदी आमे गोटे क्वेश्चन पाई 37 रु 38 सेकंड नउचे ताल ठीक अछि बट ताठो अधिक नेले हमें भी अनेक गुडा क्वेश्चन को छाड़ी के आसीबा बाय द वे आ माने नहि जे भूल देले तो माइनस मार्किंग भी हबो ओके क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 इज एन एग्जांपल ऑफ कोन ये जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 कहउछो एटा एक्चुअली सीरीज बोली कहंती जेमति कि मो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 लिखले सेही धारा रे पुनी पडिबो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर 5 ए टाइप रो पडिबो तो एटा को सीरीज बोली कहंती जस्ट टिक आगो कहउनी फिल सीरीज बोली नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर you can edit existing Excel data by pressing the which key? Option A, F1 key, option B, F2 key, option C, F3 key, and option D, F4 key. आमे गोटे एक्सेल रो सेल रे कंटेंट्स को एडिटिंग करबा को हेले चेंज करबा को हेले एमान को भितर को की को यूज करबा एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स these are the very important things these are the very interesting things also तो एक्सेल रो डाटा को हमें चेंज करबा को किछि चाहूचे ताले एमान को भितर को की को हमें यूज करबा बाय द वे F2 टा होछि ही रिनेम पाई हमें गोटे फोल्डर भी होछि गोटे फोल्डर ना चेंज करिया चाहूचे सिंपली से फोल्डर ऊपर रही के F2 की को प्रेस कर देले भी फोल्डर रिनेम हे परिबो सिंपली गोटे सेल रो कंटेंट्स को हमें एडिटिंग करबा को चाहूचे तो बाय द वे हमको कीबोर्ड रो F2 की को ही प्रेस करबा को पड़िबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू the cell references for a range of cells that starts B1 and goes over the columns G and down to the row 10 is dash this question da gote lombe ki kahichi by the way tar saransh ta hochi eya je cell reference jo ame nouche B1 ro आरंभ करी के G10 पर्यंत exactly सेटा को भली मेंशन हुए ऑप्शन ए G1 हाइफेन G10 ऑप्शन बी B1.G10 ऑप्शन सी B1 semicolon G10 ऑप्शन डी B1 colon G10 which option is the right answer हमें जो सेल रेफरेंसेस जस्ट मु आउट के कहि दूची एठी हमर तीन प्रकार सेल रेफरेंसेस यूज करा जाय गोटे होची एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस गोटे रिलेटिव सेल रेफरेंस आ गोटे होची मिक्स्ड सेल रेफरेंस ताले which option is the right answer you have give the response as C that is wrong answer the right answer is option D so जेतबेले हमें कोनोसी रेंज ऑफ सेल को नउचे हमें देखिबो जे B1 रो आरंभ करी G10 पर्यंत नउची so that is B1 colon G10 so this D option is the right answer next question for you you have a user wishes to remove a spreadsheet from a workbook धरिनिया गोटे यूजर भाबुची जे ए वर्कशीट तार दरकार नाही एंड सेटा को वर्कबुक रो ताको डिलीट करिवार अछि व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस टू ऑफ इवेंट्स दैट विल डू दिस एमानको भितरु सेटा कोटा करेक्ट इवेंट जहा कि ए काम करिवा पई यूजर को अलाउ करे ए यूजर विशेस टू रिमूव ए स्प्रेडशीट फ्रॉम ए वर्कबुक व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that will do this एमानको भितर कोटा सेटा करेक्ट सीक्वेंस ता ऑप्शन ए गो टू फाइल सेव as टाइप एक्सेल वर्कशीट ऑप्शन बी राइट क्लिक ऑन द स्प्रेडशीट टैब एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन सी राइट क्लिक ऑन द स्प्रेडशीट एंड सिलेक्ट इंसर्ट एंटायर कॉलम एंड नॉन ऑफ दिस एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स जदी गोटे यूजर गोटे वर्कबुक रो गोटे वर्कशीट को डिलीट करबा को चाहूची ताले एमान को भितरु कोटा होची से एप्रोप्रिएट मेथड जहा द्वारा कि से वर्कशीट ताको से डिलीट कर देई परिबो यू हैव गिव द रेस्पॉन्स एज बी यस दिस वन इज द राइट आंसर राइट क्लिक करबा को पड़िबो स्प्रेडशीट टैब रे हमें जो शीट टैब अछि से शीट टैब को जाई जो शीट ताको हमें डिलीट करबा चाहूतबा सिंपली ता पर राइट क्लिक करबा एंड तादिरो सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन थिबो तार देले से वर्कशीट डिलीट हिजो हां बाय द वे एटा हमें मन रखिबा जे वर्कशीट रो जदी गोटे वर्कशीट को हमें डिलीट करूचे दैट कैन नॉट बी अनडू हमें जो गोटे एक्शन करिथौ जहा जहा करिथौ प्रीवियस एक्शन को अनडू मारी के बैक करके आसी परू किंतु गोटे वर्कशीट जदी डिलीट हैला ताले सेटा परमानेंटली डिलीट हे जाय आउ सेटा अगेन बैक करके आसी पारे नाही
Okay, next question for you. What feature enables you to adjust or back solve the value in a cell to reach a desired outcome in a formula? What feature enables you to adjust or back solve the value in a cell to reach a desired outcome in a formula? एमानक भितर को फीचर टा तुमको अलाउ करे एडजस्ट करबा पई सॉल्व करबा पई वैल्यू गोटे सेल रे आमे से जो डिजायर्ड आउटकम माने गोटे फार्मूला रो माने मु चाहूची फार्मूला रो रिजल्ट एटा कैलकुलेशन करिछि बाय द वे से फार्मूला रो रिजल्ट को मते आउथरे सेटा को कोन करिवार अछि ना रिकैलकुलेट करिवार अछि तो माने मु केमिति कोन करले माने ए सेल रो वैल्यू टा कोन करि देले जहा फल कि मो फार्मूला रो रिजल्ट टा भी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हे जिवो ऑप्शन ए गोल सिक ऑप्शन बी सिनेरियो समरी रिपोर्ट ऑप्शन सी फोरकास्टिंग ऑप्शन डी ट्रेंड लाइन you have give the response as B, so that is the wrong answer. The right answer is goal seek. So goal seek is that feature मु भी पूर्व क्लास रे तुमको कहउतली टिके गोल सीक ऊपर तो गोल सीक इज दैट फीचर गोल सीक गोल माने होची लक्ष्य सीक माने होची पूर्ण करिबा सीधा सड़क ता ना ही कहि दोची ता काम भी कोन मु सब बेले तुमको गोटे कहे डियर स्टूडेंट्स गोटे जिंस कहे एक्सेल रो गोटे जिंसडा होची बहुत भलो जिंसडा ताकू टिके माने कोन कहला मु टिके मुंडे टिके पुरेबाको पड़िबो इंग्लिश कंप्यूटर पाठटा एक्जेक्टली गोटे इंग्लिश सहित भी टिके लिंक रहउची तो बुझिया को पड़िबो जे कांसेप्ट कोन कहउची से कोनटा माने बैक सॉल्व कर दो वैल्यूटा गोटे सेल रे डिजायर्ड आउटकम ऑफ द फार्मूला फार्मूला रे डिजायर्ड आउटकम को चेंज करबाको ताले गोल सीक एडजस्ट ए वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड सेल until a formula that is dependent on that cell reaches at the target value ताले एडजस्ट करिवो गोटे सेल रो वैल्यू को जे पर्यंत गोटे फार्मूला टारगेट वैल्यू रे न पहुंची जदि फार्मूला रिजल्ट मो 500 करबाको चाहूची बाय द वे पूर्वरु मनकर सेटा 250 कैलकुलेशन हेछि ताले मो को सेल रो वैल्यूटा को एडजस्टमेंट करियाको चाहूची सेटा मध्य रेफरेंस हेतिबा दरकार फार्मूला सहित ता संपर्क थिबा दरकार ताले मो सेटा को से सेल रो वैल्यू को एडजस्टमेंट कर देबी जहां पर कि फार्मूला रिजल्ट 500 होला को ऑटोमेटिकली से वैल्यूटा चेंज हो जाइथिबो जंदी सीरीज रो वैल्यू समटा 500 ही होतिबो दैट फीचर इज नोन एज गोल सीक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट टर्म describes background that appears as a grainy non-smooth surface what term describes the background that appears as a grainy non-smooth surface option A gradient option B pattern option C solid and option D texture anyone can give the response क्वेश्चन नंबर 98 व्हाट इज द राइट आंसर कोन ता सीटा बैकग्राउंड रो डिस्क्राइब करे जहा कि ओडे ग्रेनी माने के अलगा प्रकार तार सब प्री डिफाइंड अछि सीटा सेही प्रकार स्कीम गुडा का में नहीं परिबा यू हैव गिव रिस्पांस एज ए एस ए इज द राइट आंसर ग्रेडियंट इज द राइट आंसर ग्रेडियंट टेक्सचर पैटर्न ओडा सब थाए विभिन्न डिजाइनिंग अप्लाई करिया पे सो एटा जो ए सब तो बैकग्राउंड रो चेंज पई यूज करा जाए बट ए क्वेश्चन रा आंसर होची ग्रेडियंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एक्सेल इज ए व्हाट ऑप्शन ए ग्राफिक प्रोग्राम ऑप्शन बी नॉन ऑफ दिस ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर एंड ऑप्शन डी स्प्रेडशीट व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय एक्सेल पाई इमानक भितर को टर्मटा लागू ऑप्शन ए ग्राफिक्स प्रोग्राम ऑप्शन बी नॉन ऑफ दिस ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर एंड ऑप्शन डी स्प्रेडशीट यू हैव गिव रेस्पॉन्स एज डी एस मु तो प्रथम भी डिस्कशन करी आसुची माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ढाई गोटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर so this is the right answer next question for you question number 100 to create an interactive pivot table गोटे इंटरैक्टिव पाइवट टेबल को क्रिएशन करबा को हेले फॉर द वेब इंटरनेट रे बा वेब रे यू यूज ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब कंटेंट्स निश्चित भाबे माइक्रोसॉफ्ट जिंस माने से आउट कोनता रिलेटेड कंटेंट्स रखि दिबो ताले से जो कंटेंट्स ता कोन ऑप्शन ए एचटीएमएल ऑप्शन बी pivot table field list option C pivot table list and pivot table report which option is the right answer option A option B option C या फिर option D
गोटे पाइवट टेबल को इंटरएक्टिव वे रे इंटरएक्टिव माने रो को कॉलम को कन्वर्ट करिवो कॉलम को रो को कन्वर्ट करिवो तमर जो अनुसार रिक्वायरमेंट अछि ऑन द वेब बेस माने इंटरनेट बेस ताले एमान को भीतर को ऑप्शन टाको तमे यूज करिवो तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी तमे सेतबे तुमको यूज करियो को पड़िवो पाइवट टेबल रिपोर्ट ताले पाइवट टेबल रिपोर्ट द्वारा ही तमे ए जिंसडा करि परिवो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू when integrating Word and Excel, Word is usually the option A server, option B client, option C source and option D none of these. जेतबे तमे वर्ड आ एक्सेल डाटा को इंटीग्रेट करिया चाहूछो एकाठी व्यवहार करिया को चाहूछो ताले सेतबेले सेटा कोन एक्चुअली करिवो वाटर रो भूमिका सेतबेले कोन हबो सर्वर क्लाइंट सोर्स नन ऑफ दिस एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स question number 101 what is the right answer the right answer is client सेतबेले वर्ड गोटे क्लाइंट हिसाब रे काम करिवो when integrating word and excel what is usually the ताले सेटा गोटे क्लाइंट प्रोग्राम okay next question for you the number of rows in excel worksheet एटा बाय द वे पूर्ण वर्षन अनुसार अछि एटा होची राइट आंसर हबो 65536 किंतु एबे जो लेटेस्ट वर्षन जेतरा अपग्रेडिंग हे जाय कि 10,48,576 टा रो हे जाय छि पूर्ण समय रे मोर 256 कॉलम थिला एवं 65,536 टा रो थिला नुआर अपग्रेडेशन है कि 10,48,576 रो हे जाय छि एवं 16,384 टा कॉलम हे जाय छि okay next question for you when a formatted number doesn't fit within a cell it displays तमे गोटे सेल को फॉर्मेटिंग कल बाय द वे ता कंटेंट्स ता सेल रे फिट हे पारिला नाही ताहले सेटा केमिति डिस्प्ले हबो ऑप्शन ए हास 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 ऑप्शन बी हास div/0 ऑप्शन सी हास div@, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जितेबले गोटे फॉर्मेटेड नंबर बा फॉर्मेटेड कंटेंट्स गोटे सेल रे फिट हे पारिला नाही बा सेल रो विड्थ अनुसार सेट हे पारिला नाही ताले सेतेबले सेटा को भली डिस्प्ले हबो एनीवन कैन गिव द रिस्पांस तो राइट आंसर इज यू गिव एज डी एस someone give as a so a is the right answer this one is the right answer जेतेबले गोटे एक्सेल रो वर्कशीट रे कोनोसी कंटेंट्स फिट हे पारिला नाही गोटे सेल रे गोटे कोनोसी कंटेंट्स फिट हे पारला नाही सिंपली सेटा हास हास हे देखा जाय तापर सेल विड्थ को तमे कॉलम विड्थ को एडजस्टमेंट कर देला परे से कंटेंट्स ता फिट हे जाय सो ऑप्शन दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इट भी देखै दिछि गोटे देखो ता डायलॉग बॉक्स सुंदर भाबे देखै दिछि मने करो मु एठी डेट उडा के एंट्री करूची डेट उडा केतला बड़ हे गला तो जेतला बड़ हे जाउची डेट ता सेतबेले कोन होउची देखो एठी केवल 10/4 एटा गोटे शो कला किंतु ता परठू सेटा बड़ हि जीव जोगु वो हास हास पड़ी जाइछि हमें एठी सेल कंटेंट्स को एठी क्लिक कर देले डबल क्लिक बा टाणी देले कॉलम विड्थ ताको ताले ए कंटेंट्स उडा को सब शो करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द सिंबल यूज्ड टू एंटर नंबर्स एज ए टेक्स्ट इस सिंबल ता कोन जेतबे गोटे नंबर को हमें टेक्स्ट हिसाब रे यूज करिवा को चाहूतिबा एक्सेल रे कोन से गोटे नंबर को हमें टेक्स्ट आकार रे व्यवहार करिवा को चाहूचे बाय द वे सेमान को भितरु को सिंबल टा को हमको यूज करिया को पड़िबो ऑप्शन ए स्टार्टिंग कोट ऑप्शन बी एंडिंग डबल कोट ऑप्शन सी इक्वल टू एंड ऑप्शन डी प्लस एमान को भितर को सिंबल टा को हमको यूज करिया को पड़िबो यू हैव गिव रेस्पॉन्स एज ए सी दैट इज द रॉन्ग आंसर दिस वन मुझे तुमको जस्ट टिके कहि दउची कोन पई एटा हबो गोटे नंबर ता टेक्स्ट हिसाब रे हमर काउंटिंग करबा को हम चाहूची ताले नंबर ता टेक्स्ट हिसाब रे काउंटिंग हो माने जेतले बहुत सारा लेखा लेखा जाए ताकू डबल कोड भीतर लेखा जाए ताकू स्ट्रिंग बोली कहंती एंड जेतले स्ट्रिंग मु कहिची स्ट्रिंग नु हमें भाबु तो सारे गोटे कहलन को स्ट्रिंग माने जो मिलुची हम दुकान मान करे नेलिया कलर आ नालिया कलर जो माने कोन कोल्ड ड्रिंक्स
से विषय को चिन्ह दैट इज स्ट्रिंग मु कहूची स्ट्रिंग STRING जेतबे डबल कोट भितरे नंबर लेटर जहां भी मिसिक लिखा हला मेंचाए सेटा को कहआ जीवो गोटे स्ट्रिंग बोली एंड जेतबे सिंगल कोट भितरे बा गोटे कमा आरंभ गोटे कमा शेष ता भितरे लिखा जाउथिबो ताको गोटे कैरेक्टर बोली कहंदी ताले नंबरटा जेतबे मन कर आमे 1 लिखुचे दैट इज अ नंबर बट सिंगल कोट भितरे जेतबे 1 लिखिबा दैट इज द कैरेक्टर सो सेटा नंबरटा से पछारतला भी सहीया गोटे टेक्स्ट हिसाब रे बा कैरेक्टर हिसाब रे से नबो ताले ऑप्शन ए सिंगल कोट रे सेटा आरंभ करिबा दरकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू बाय द वे किछि किछि हिंट्स रहि जाइछि हम उस में आंसर टा दिए कहै सुविधा होछि नै कि अच्छा हो ठीक अछि डाटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग हमें डाटा को असेंडिंग बा डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजेइबा माने बड़ रु छोट क्रम रे बा छोट रु बड़ क्रम रे लेखा थाउ बा संख्या थाउ ताहले हमको एमानक भीतर कोटा यूज करिया को पड़िबो ऑप्शन ए शॉर्ट कमांड फ्रॉम द टेबल मेनू ऑप्शन बी शॉर्ट कमांड फ्रॉम द डाटा मेनू ऑप्शन सी शॉर्ट कमांड फ्रॉम द टूल्स मेनू एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज एनीवन कैन गिव द रिस्पांस एमानक भीतर कोटा मते यूज करिया को पड़िबो जदी मते डाटा को सॉर्टिंग करिवार अछि yes you have give response as option B so option B is the right answer this one is the right answer ताले मते डाटा टैब को जीवा को पड़िबो डाटा टैब को ही शॉर्ट को जीवा को पड़िबो सेठी डाटा को हमको असेंडिंग ऑर्डर बा डिसेंडिंग ऑर्डर जहां हमें सॉर्टिंग करिबा को चाहूतिबा सजे देई परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एठी भी देखि छिसी तो डाटा टैब भीतर ही शॉर्ट थाए सेठी असेंडिंग डिसेंडिंग मारी की हमें एमती वासीट रो डाटा गुडा को सॉर्टिंग करि परिबा तो किछि किछि तुम पई जनरल डायलॉग बॉक्स भी अछि जहा कि तुमको बुझिया को भी सुविधा हबो तो इट जे कि शॉर्ट मारी देले असेंडिंग बा डिसेंडिंग ऑर्डर रे डाटा गुडा को सॉर्टिंग ही जाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्केटनेटिंग ऑपरेटर एमान को भितरु कोटा होछि कॉन्केटनेटिंग ऑपरेटर हमें एक्सेल रे बहुत सारा फंक्शन विषय रे पढी छी तले एक्सेल रे जो बहुत सारा फंक्शन ताको मुख्यतः 9टा कैटेगरी हमें बांटी किछि फंक्शन होछि फाइनेंशियल फंक्शन किछि फंक्शन होछि टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन किछि फंक्शन होछि हमर कोन जोटा कहउछि स्टैटिस्टिकल फंक्शन किछि फंक्शन होछि मोर लॉजिकल फंक्शन किछि फंक्शन होछि फाइनेंशियल फंक्शन तो मु कहिबा कथा कॉन्केटनेट ता होछि जनरली गोटे टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन एंड कॉन्केटनेट रो काम होला दीटा टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ीबा दीटा कोन जेते टेक्स्ट स्ट्रिंग को चाहिबा हमें जोड़ी के गोटे टेक्स्ट स्ट्रिंग बनै परिबा ताहले एमानक भितर को जिंसटा यूज करा जाय ऑपरेटर रूप अपोस्ट्रोफ एक्सक्लेमेशन ampersand and hash anyone can give the response question number 106 what is the right answer you have give response as option C yes this one is the right answer आमे जदी कॉन्केटनेट करिवा को चाहूतिबा ताले सेथि पई बाय द वे हमको एम्परसेंट रो यूज करिवा को पड़िबो एम्परसेंट माने जोटा को हमें एंड बोली कहू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू red triangles at the top right corner of a cell indicates red triangle at the top right corner of a cell indicates red triangle माने गोटे त्रिभुज बोली देखा जाए तो सीटा जतले राइट कॉर्नर रे देखा जाए सेल रो सेटा कोन इंडिकेट एग्जैक्टली करै थे ऑप्शन ए देयर इज एन एरर इन द सेल देयर इज ए comment associated with the cell option C the font color of the text in the cell is red option D the cell cannot accept formula एटा कोटा सेटा बा को स्टेटमेंट ता पई होची ट्रू रेड एंगल रो माने होची कोनटा सेटा हुए बेले बेले देखिथिबा तळे गोटे हमर माने सेल रो कंटेंट्स रो इंते गोटे नाली रो एठी गोटे त्रिभुज भलिया देखा होथिबो तो बाय द वे सेटा कोन मेंशन करिथे बहुत छोट मोट जिंस बेले बेले एग्जाम रे आसे ए छोट मोट जिंसडा का हम जानि नथो हमें कहू सब ठीक थिला जे ए जो कंप्यूटर पर बहुत कष्ट पड़ी गेला तो कंप्यूटर किछि कष्ट नै कंप्यूटर ही प्रथम रु सहज पाठ एटा समस्ते हमें जानि छी बाय द वे ताकुटे टेक्निकल वे रे किंतु बुझिबार अछि जनरल वे रे टिके बुझिले से जो क्वेश्चन गुडा सॉल्व करबा कष्ट होई जाय ताले मोर इट सिंपली थिंग
तो इटा कोटा यूज करा जाए रेड एंगल ट्रायंगल टा कोन पाई यूज करा जाए यू हैव गिव रेस्पॉन्स एज बी इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विथ द सेल से सेल पाई किछि कमेंट दिया जाइछि से सेल पाई किछि मतामत दिया जाइछि तो कमेंट देला बळे F5 की को भी हमें प्रेस करि परिबा तो से सेल पाई हमें किछि कमेंट्स देई परिबा रिमार्क्स देई परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एट देखि दैछि देखो मु एटा डायलॉग बॉक्स ता देखैथिल तुम प्रथम जानि जाई थांदो बाय द वे एमती देखैथिबो गोटे त्रिभुज भलिया एटा देखा जाउथिबो तो माने एठी गोटे ए सेल पाई मु किछि गोटे कमेंट्स दबा को चाहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू to select multiple non-adjacent cells in a worksheet you will click them holding to select multiple non-adjacent cells in a worksheet you will click them holding option A control key option B alt key option C shift key option D control plus shift key anyone can give the response adjacent करिबा को हेले एमानक भितरु को जिंसडा को हमकु यूज करिबा को पड़िबो anyone can give the response to select multiple non adjacent cells in a worksheet you will click them holding हमकु कोन धरिबा को पड़िबो मल्टीपल को जदि हमें सिलेक्शन करिबा को चाहूचे you are give response as alt key wrong answer हमको कंट्रोल की ही धरिबा को पड़िबो कंट्रोल की को धरिला परे हमें मल्टीपल सेल को सिलेक्शन करि परिबा कंट्रोल की बाय प्रेसिंग कंट्रोल की वी कैन सिलेक्ट द मल्टीपल adjacent cells नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एई भली जिंस तो कंट्रोल की को धरि की हमें एडा सिलेक्शन करि परिबा एक रो अधिक सेल को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू cell E23 has a date value and you wish to place that date on an invoice prefaced with the text located in B15 what is the command to do that cell E23 रे थिबा डेट वैल्यू को हमें प्लेस करबा को चाहूचे हमर ओटे अलगा कोनसी जगह जेंति कि B15 रे ताले हमको को कमांड को यूज करबा को पड़िबो बा को भली जिंस को यूज करबा को पड़िबो ऑप्शन ए इक्वल टू B15 and E23 option B equal to proper B15 and text E23 date YY माने एटा month day year बा C B15 and E23 and join B15 and 23 which option is the right answer आमे जदी एई जिंसडा करिबा को चाहूचे ताहले हमकु कोटा यूज करिबा को पड़िबो एनीवन कैन गिव द रिस्पांस you have give response as option C no option C is not option B is the right answer हमको option B ही यूज करिबा को पड़िबो ओके option B को ही हमको यूज करिया को पड़िबो तो प्रॉपर फंक्शन रे एटा करि कि हमें पकीले सेही अनुसार सेटा मर्ज हे जाई परिबो Next question for you. How many sheets are there in Excel workbook by default? By default, कोटे वर्कशीट रे कोटे वर्कबुक रे केतेटा शीट डिस्प्ले हुए बाय द वे आंसर पळे आसी तळे लिखाई जाइछु तो बाय डिफॉल्ट हमर तीनटा ही देखा जाय शीट 1 शीट 2 शीट 3 किंतु एबे नुवा वर्जन भी आसलानी ना दुईटा ना तीनटा ना चारटा ना पांचटा भी शो करूची ऑप्शन जदी एक थिबो भी सेटा भी क्लिक करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एट पूरा देखि दोछि देखो शीट 1 शीट 2 शीट 3 पूर्ण वर्जन मानकर एमति आछला एबे केवल गोटिए शीट आछी शीट 1 जेमति वर्ड रे गोटिए पेज आछी बाय डिफॉल्ट सेमति एक्सेल रे मध्य बाय डिफॉल्ट गोटे वर्कशीट आछी शीट 1 नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which of the following component displays the contents of the active cell which of the following displays the contents of the active cell option A name box option B formula bar option C menu bar option D status bar which option is the right answer which of the following component displays
द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल एमानक भितरु कोटा से एक्टिव सेल रो कंटेंट्स को डिस्प्ले करे एनीवन कैन गिव द रिस्पांस एक्टिव सेल रो कंटेंट्स को की डिस्प्ले करे you have give response as option B is this one is the right answer option B is the right answer actually formula bar ही हम सेल रे कोन काम होउची बा सेल रे कोन होउची सेटा ही डिस्प्ले करि थाए ओके बाय द वे इटी डिस्क्रिप्शन टा दे दीची तो तुम सेते सुविधा होउची अच्छा टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस गोटे प्रीवियस वर्कशीट को जिबा कोले हमको कोन प्रेस करबा को पड़िबो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज अप ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज डाउन ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस प्रीवियस वर्कशीट को हमको जीवा को पड़िबो तो बाय द वे हमको कोन प्रेस करबा को पड़िबो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कंट्रोल पेज अप मारिया को पड़िबो ताले हमें प्रीवियस वर्कशीट को जाई परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द अकाउंटिंग स्टाइल शोज नेगेटिव नंबर्स इन द अकाउंटिंग स्टाइल शोज नेगेटिव नंबर्स इन ऑप्शन ए बोल्ड ऑप्शन बी ब्रैकेट्स ऑप्शन सी पैरेंथेसिस ऑप्शन डी कोट्स इमानक भितर कोटा यूज करा जाय The accounting style shows negative numbers in negative number गुडा का शो करिवा कोले इमान को भितर कोटा यूज करा जाय anyone can give the answer the right answer is option C this one is the right answer parenthesis वे रे हमें सेटा देखि पारु काहे कि ना एटा सब बेले नेगेटिव नंबर गुडा का माइनस पकी के दिखाए so option C is the right answer next question for you the process of identifying specific rows and columns so that certain columns and rows are always visible on the screen is called हमें जो प्रोसेस रे आइडेंटिफाई करिवा रो आ कॉलम गुडा को जहां पर कि किछिटा कॉलम एबो रो सब बेले विजिबल होथुवा स्क्रीन रे ऑप्शन ए फ्रीजिंग ऑप्शन बी लॉकिंग ऑप्शन सी सिलेक्टिंग ऑप्शन डी फिक्सिंग जेमति कि मने करो मते गोटे हेडिंग दिया जाइछि नेम मार्क्स रोल नंबर तळको तळको 500 जन को नंबर एंट्री हिछि मते एबे कोन करिवार अछि से जो नेम मार्क्स आ रोल नंबर को हाइडिंग करिवार नै काइना सेटा मोर रो रो हेडिंग अछि ताले को फीचर रे मो एमिति स्क्रॉल कला को सब स्क्रॉल हे जाउछि बट को फीचर रे सेटा मो बाय द वे कांस्टेंट रखि देबी एंड अन्य तळ रो गुडा को स्क्रॉलिंग हबो is you have give the response as freezing option A is the right answer जदि भी न जानिछ तळे डिस्क्रिप्शन भी लिखिछि ऑप्शन ए टा होछ राइट आंसर फ्रीजिंग रे जिंस करी हुए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हेन यू क्रिएट 2 or 4 separate windows containing part of the spreadsheet that can be viewed you have created option A sections option B panes option C views and option D subsheets when you create rows ताले इमान को भितरु हमें कोटा यूज करिवा you have give response as option D no that is wrong subset किछि ओटे सेमति ओटे नाही तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर पैन्स डिफरेंट पैन्स माध्यम रे हम सेटा डिस्प्ले करथौ माने सेक्शन गुडा सब पके दिथो एटा होची शीट 1 सेटा शीट 2 सेटा सब पैन बोली कहंदी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एई भले सब हमें सब एई भले सब स्प्लिटिंग करू माने एटा गोटे पैन एटा गोटे पैन एटा गोटे पैन एटा सब पार्ट एंती ही जाय शीट भीतर तो एबीसी 9 पर्यंत गोटे पार्ट रहि गेला एपट को गोटे पार्ट रहि गेला एटा गोटे पार्ट रहि गेला सेटा गोटे एंती दी पट को आरो भले हम टाणीला पई देखिबो okay next question for you to keep specific rows and columns from the scrolling of the screen you first must position the cell pointer option A to the right of the column you want to remain on the screen option B below the row you want to remain on the screen option C
on the row you want to remain on the screen. Option B, both below and right of the row and columns you want to remain on the screen. Which option is the right answer? To keep the specific rows and columns from the scrolling up. किसी specific row एवं column को मु scroll up रे बा scrolling न करी constant रखिबा को चाहूची ताले first position मते cell pointer टा quote करिबा को पड़िबो. Question number 116. Which option is the right answer? Option D is the right answer. मते कौन करिबा को पड़िबो ना both row और column रो freezing feature को active करिबा को पड़िबो. To both below and right of the row and column you want to remain on the screen. दुईटा जाका मते करियो पड़िबो. Right माने एपड रहिला सेपड माने below रे रहिला. ताले सेटा तळ माने डाहाणा पटो भी म स्क्रॉलिंग करि परिबे माने कॉलम जदी फ्रीजिंग हेतिबो एंड जदी रो गुडा को फ्रीजिंग हेतिबो ताले बिलो गुडा को स्क्रॉलिंग करिवो ऊपरटा सेम कांस्टेंटली रहिबो. ओके एटा देखे भी देइछि से तुमको ए टाइप रो फ्रीजिंग मु कर दे परिबी कांस्टेंटली सेटा रहिबो एंड अन्य गुडा को स्क्रॉलिंग हबो. If you wanted to sort an employee file so that they would be listed alphabetically by last name and first name within individual zip codes, mane smallest to largest, which of the following would be a correct order of the sort? If you wanted to sort an employee file so that they would be listed alphabetically by last name and first name within individual zip codes, which of the following would be the correct order of sort? Option A, zip codes ascending, then last name ascending, then first name ascending. Option B, last name ascending, then first name ascending, then last name ascending. Zip codes descending, then last name ascending, then first name ascending. Option D, last name descending, then first name descending, then last name descending. Which option is the right answer? जदि आमे जिप कोड माध्यम रे डिफाइन करिबा को चाहूचे ताहले हमको कोन करिबा को पड़िबो. If you wanted to sort an employee file so that they would be listed alphabetically by last name and first name. Last name एवं first name रे alphabetically वरी माने ए थारु जेड भितर देखैबो ताले इंडिविजुअल जिप कोड्स माने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ताले इमान को भितर कोटा होची राइट आंसर. You have give response as option A. Option A टा होची राइट आंसर. तो ऑप्शन ए रे कोन करि हबो ना मते जिप कोड को जिबा पड़िबो एंड बाय द वे मते सेटा को यूज करिया को पड़िबो. कोन यूज करिया को पड़िबो ना सेई गोटा को जो असेंडिंग अछि आ डिसेंडिंग अछि मते एई जिंसडा करिया को पड़िबो. जिप कोड असेंडिंग देन लास्ट नेम भी असेंडिंग देन फर्स्ट नेम भी असेंडिंग सब गुडा को मते असेंडिंग ऑर्डर रे ही सजिया को पड़िबो ताहले ही अल्फाबेटिकली रे by A through Z पर्यंत शो करिवो. So option A is the right answer. Next question for you. If you require more than two conditions or if you want to analyze a list using Excel 2023's database functions, you must define which filter. एमानक भितर को फिल्टर को तमे यूज करिवो जदि more than one condition at the same time तम व्यवहार करिया को चाहूछु. Option A auto filter, option B update filter, option C advanced filter and option D advanced criteria filter. Which option is the right answer? Anyone can give the response? जदि तमे more than one condition को व्यवहार करिवा को चाहूछो ताले एमानक भितरु तमको कोटा व्यवहार करिया को पड़िबो. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. Anyone can give the response? एका समय दीटा कंडीशन माने आइदर अल्फाबेटिकली किछि जिंस को म कंडीशन रे पकेइछि किछि नंबर रिलेटेड भी जिंस को कंडीशन रे पकेइछि तो बाय द वे मते कोठा को यूज करिवा को पड़िबो. Anyone can give the response? मते सेठी यूज करिवा को पड़िबो एई जिंसडा एडवांस फिल्टर को ही मते यूज करिया को पड़िबो. So this one is the right answer. मते एडवांस क्राइटेरिया फिल्टर को पकेया को पड़िबो
जोटी कि मोर देन वन कंडीशंस अप्लाई करि परिबी गोटे सेल पाई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए क्विक वे टू रिटर्न टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए वर्कशीट इज टू टाइप द डैश सबुठारु सहज बाट गोटे वर्कशीट रो कोन सोटे निर्दिष्ट जगह को आसिया पाई ऑप्शन ए नेम बॉक्स ऑप्शन बी फॉर्मूला बार ऑप्शन सी जूम बॉक्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच गोटे वर्कशीट रो निर्दिष्ट जगह को आसीबा को हेले हमको कोन करिवा को पड़िबो you have give the response as formula bar so that is the wrong answer the right answer is name box quick way to return the specific area मने करो मते जिबार अछि h100 को हले नेम बॉक्स को मते जिबा को पड़िबो एंड सेट जाई कि h100 लिखियो पड़िबो ता माने h कॉलम 100 रो पर्टिकुलरली सेही जगह रे मते नेके वर्कशीट पहुंचै देबो तो नेम बॉक्स रे मते ए जिंसटा को टाइप इन करिया को पड़िबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which keyboard shortcut opens the go to dialog box एमान को भितर को शॉर्टकट कीटा यूज करा जाए गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करिबा पाई which shortcut key is used to open go to dialog box को ओपन करिबा पाई को शॉर्टकट की को यूज करा जाए you have give the response as option A wrong answer control plus B control shift B F2 या फिर F5 हमर कोटा गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करथे गो टू डायलॉग बॉक्स सिंपली हमर ए जिंसटा यूज करा जे F5 द्वारा हमें गो टू डायलॉग बॉक्स रो ओपन करि परिबा ओके the time is very powerful and today we have the journey from this point on the next class onwards I will come some another interesting topics for you on computer so next class रे मो आउ किछि तम पय नुवा जिंस धरि केसरी कंप्यूटर रो हमें डिस्कशन करिबा ओके थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस क्लास